Hi everyone, I'm Arshdeep and welcome back to your logical reasoning sessions. So, the topic that we're going to discuss today is going to be analytical reasoning. Now, this is a very interesting topic because you get a lot of variety of questions which are really interesting to solve. Now, the questions here have absolutely no rules. There are no certain conditions. There are no fixed ways to do these questions. They are absolutely based on how fast you are at solving, kind of complicatedly written and lengthy questions. So let's begin. Now, firstly, I want to just give you some information about these kind of questions. Mostly, all the questions that come from this particular section are really lengthy. They are long. They have a number of sub kind of headings, or maybe you could just say they have a number of pointers, number of conditions where you have to which you have to use to make your question. However, some points to keep in mind are that there are a lot of times when some pointers they are just given to confuse you. They are redundant, they do not have to be used in the question, but just to make the question look a lot more difficult, those are given there. So it is always imperative that you can figure out that what is actually required and what is not. Now, analytical reasoning based questions could contain numbers also, and it could not. They could be without the numbers also. They could just be based on arrangements or different things. So here you will put into use your seating arrangement type of knowledge. You will put here your DI related knowledge. All of this collectively forms your analytical reasoning section. So let's begin. We'll attempt a few questions. We'll include some number related questions and some general questions as well, and take up a variety of moderately easy to slightly complicated questions. Let's begin. Okay, so this is a very easy. So let's start with our first question. Now, this is a pretty easy question, so let's start with this. Now, here you can see that there is some knowledge given, and you have to use all this information, all these pointers to actually solve your question. So, it is always important, and the first point should always be to read the question carefully, to see that you don't miss out on any points, and to see that whether you have to construct the trend or construct the pattern once, and in every different question that is asked thereafter, is it the same trend that is used, or there could be questions where some information is provided but in the later questions some or the other information is changed and you have to change the pattern. So keep that in mind. Now here let's start reading. The question says that 5 brands, Tata, Maruti, Honda, Hyundai and General Motors, they are to be rated. And there are certain points that are given for helping them rate. Now, the first point is that Tata is rated higher than Maruti but rated lower than General Motors. Honda is rated the lowest. Hyundai is rated higher than Maruti and little lower than Tata. So let's start this. Now I can see that there are 1, 2, 3, 4 and 5. So let me put these positions 1, 2, 3, 4 and 5. Now, right off the back, I can see that there is one point which is very clear. आपको सबसे पहले select करना है कि कौन से points ऐसे हैं जो right clear हैं, जो बिल्कुल exact हैं, जिनकी positions defined हैं, because वही points help करेंगे बाकी सबकी arrangement को easy करने में. So यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि Honda is rated the lowest. That means Honda की position lowest है और ये given है. That means this is not going to change. अब बाकी की इन 4 positions के अंदर मुझे ये 4 companies arrange करनी है. So now at least one of these options is side. Now this makes it slightly easier to solve. अब फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पर लिखा है कि टाटा इज रेटेड हायर देन मारुति बट रेटेड लोअर देन जनरल मोटर्स.
motors. So let's see. Tata is rated higher than Maruti. So this is Maruti and Tata is iske upar, but it is rated lower than General Motors. So that means this is the thing. General Motors, Tata जो है मारुति से higher है लेकिन General Motors से लोअर. लेकिन अब कितनी लोअर है, इनके बीच में कोई है या नहीं, दिस इज नॉट डिफाइंड. सो लेट्स सी. अब लास्ट पॉइंट देखते हैं. This says that Hyundai is rated higher than Maruti and little lower than Tata. So Hyundai is rated higher than Maruti. ये मारुति से ऊपर है Hyundai. लेकिन अब अगर यहाँ है तो ये यहाँ भी हो सकता है. So उसी के लिए the latter half which is given and the question is that it is little lower than Tata. यानी मारुति से ऊपर and little lower than Tata. So that means मुझे कुछ इस तरह से मिल गया कि जनरल मोटर्स, टाटा, Hyundai इससे लोअर एंड उसके बाद मेरी मारुति. यू कैन अगेन गो अहेड एंड सी. सो लेट्स जस्ट अरेंज दिस. जनरल मोटर्स, टाटा, Hyundai and Maruti. Now to make everything clear, just go over all the points quickly and see कि ये जो सारे points हैं और मैंने जो ये arrangement किया है ये दोनों चीज़ें same हैं. So first point, Tata is rated higher than Maruti. So Tata is rated higher than Maruti but lower than General Motors. So first point correct. Honda is rated lowest, all right. And the third, Hyundai is rated higher than Maruti. Hyundai जो है मारुति से ऊपर है, but it is little lower than Tata. It is little lower than Tata. So that is all my 3 points are being followed. So this means मेरी ये जो arrangement है ये ठीक है. Now let's go ahead and see इससे related questions. So as I said, the questions are going to be pretty easy. So here. यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं सारी की सारी जो अरेंजमेंट है वो आपके लिए लिख देती हूँ. सो हियर आई हैव द फर्स्ट विच इज जनरल मोटर्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो सेकंड इज गोइंग टू बी टाटा, द थर्ड इज गोइंग टू बी Hyundai, the fourth is going to be Maruti and the last one is Honda. All right, so यहाँ पर which brand is rated the highest? Of course, we have the first one which is General Motors. Which brand is rated in the middle? So दो ऊपर दो नीचे, center में Hyundai. So option D. And last, which brand is rated at the second place? Of course, you can clearly see and the answer is Tata. So as I said, this is going to be a pretty simple question. However, you never know, if you're lucky enough, you might just get something as simple as this in your exam. But what you have to learn from here is actually how to use these points, how to arrange your information into specific order. Now, let's go ahead and solve another question. Okay. So we're talking about complexity. We've increased it here because here you can see that you have a lot of information. Now that is the problem with these kind of questions particularly, that they necessarily won't be very difficult. They might not even contain numbers. It's just that the information is so much and during your exam the pressure is so intense that you really get confused. So it is imperative that you give your mind that space to relax, to train your brain in a manner that it's okay to practice enough that how you would read this so much of information, because this will not only help you with these kind of questions but any passages that are given or anything else which has a lot of information, because you don't want to miss any important point, and that is very important. Now let's go ahead and start doing this question. Now in this question we have this information. 4 people of different nationalities, they live on same side of the street in 4 houses. Each of the houses of a different color. Each person has a favorite different drink. So we know that there are 4 houses. Each house is of a different person of a different nationality. Each house has a different color and each person living in the different house has a different favorite drink. So there are a lot of things. So first is going to be color of the house, position of the house, nationality of the person, then you have your favorite drink.
So you have to keep in all those things in mind, and you have to construct कि कैसे ये चार घरों में placed हैं. Now to help you with that, you have all this information. So firstly, let's start by constructing 4 houses. Okay, ये मैंने 4 houses बनाए because it is given that there are 4 houses. Okay, so let's start with the information that is given here. The Englishman lives in the red house. So Englishman lives in the red house. Okay, now I will suggest कि आप एक थोड़ा सा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर जब इतनी इन्फॉर्मेशन है एंड इट्स जस्ट गिवन इन दिस फॉर्म, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड. सो आपको किसी भी तरह से यू लाइक टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल, यू वुड लाइक टू कंस्ट्रक्ट, make some drawing, however it is absolutely your personal choice. Just ensure that your choice is not very time consuming. So I feel that यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा टेबल बना लूँगी तो मेरे लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है लिखनी वो बहुत ईजी हो जाएगी. सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक बना लिया जहाँ पे मैंने लिखा नेशनैलिटी, देन आई हैव माई कलर क्योंकि हाउस कलर देखना है, एंड देन आई हैव द ड्रिंक. ठीक है. सो सबसे पहले मैंने देखा कि इंग्लिशमैन जो है उसके बारे में कहा गया है कि ही लिव्स इन द रेड हाउस. ऑल राइट, क्योंकि अभी नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज मैंने हाउसेस तो बना दिए, बट आई एम स्टिल नॉट वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि कैसे जो है वो हाउसेस में प्लेस्ड है. सो आई डोंट नो इफ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर or there. So it is always better कि पहले information clearly रखो and then you can allot the information. Okay. The Italian drinks tea. So I have my Italian. अभी मुझे हाउस कलर नहीं पता लेकिन उसकी ड्रिंक है टी. Okay. Then the Norwegian lives in the first house on the left. Now again, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, you need some information that has to be specific. Now this information is absolutely specific क्योंकि इस information में है कि Norwegian जो है he lives on the first house on the left. That means ये जो left से house शुरू हो रहा है पहले वाला, this is Norwegian's house. Alright, so अभी हमें इसके कलर नहीं पता, ड्रिंक नहीं पता, but let's just put it here. Okay, now in the second house from the right they drink milk. So again, this is an exact information. So second house from the right. Now ये left था, ये right था. Now second house from the right, that means first and second, they drink milk. So जो information exact है वो मैं इसे यहाँ put कर रही हूँ और जो नहीं पता वो मैं यहाँ. So यहाँ पर अब milk तो ठीक है, but milk पीता कौन है? We're not sure. So we'll just let that be there. Okay, now next up, the Norwegian lives adjacent to the blue house. Now again, this is a specific information. Why? Because Norwegian जो है वो adjacent है blue house के, और पहले ये दिया हुआ है कि वो सबसे cornermost house पे है. That means उसके adjacent left में तो कुछ है नहीं. So only the right house is an option. The right side पे जो house है वो है blue color का. All right. So हमें यहाँ पर एक house का color भी पता चल गया है. But we still don't have any information as to blue house किसका है. So it's okay. Let's go ahead. The Spaniard drinks fruit juice. So ये हमारा last person था जिसकी nationality is Spain, and then he drinks fruit juice. All right. Okay. Then tea is drunk in the blue house. So here I'm going. यहाँ पर blue house है, यहाँ पर ये लोग टी पीते हैं, and exactly I can see कि टी कौन पीता है? Italian. So that means ये जो है ये Italian का घर है. So I can put my information here that this house is blue and tea is being consumed here. Last is the white house is to the right of the left house. Okay, I'm sorry, this is not left, this is red. Alright, so the white house is to the right of the red house. So यहाँ पर आप देखोगे कि ये house जो है वो blue है, और जो भी house की हम बात कर रहे हैं वो right side पे है. So अगर ये house हमने बोला कि एक हमें चाहिए white house जो है, so by this statement I mean कि ये red house है और red house की right hand side पे white house है. तो अगर ये red होगा तो ये white नहीं हो सकता because it's already blue.
यहाँ रेड और वाइट नहीं हो सकता, सो द ओनली ऑप्शन इज कि यहाँ रेड हो और ये वाइट हो. सो दिस इज गोइंग टू बी माई रेड हाउस एंड उसकी राइट हैंड साइड पे ये है वाइट हाउस. ऑल राइट. सो अब देखते हैं कि हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिली. रेड हाउस हमने देखा था कि था इंग्लिश मैन का. सो यहाँ पर ड्रिंक है मिल्क एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं दैट इट बिलोंग्स टू द इंग्लिश मैन. ऑल राइट. देन वी हैव नॉर्वेजियन, स्पेन एंड फ्रूट जूस. अब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है. अब मुझे पता है कि नॉर्वेजियन लिव्स हियर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो स्पेनियार्ड है ही हैज़ टू लिव हियर. सो the Spaniard lives in a white house and consumes fruit juice. So the last option will be Norwegian, which is going to be here. Now, इसके बारे में हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, so that's okay. Maybe शायद questions में आगे दी हो. Now, this is a big table, so I suggest that you can note it down here, or you can just, put it somewhere, put this information, because in the next slide where we have the questions, वहाँ पर ये information लिखी नहीं है. I have it in my notebook. I suggest you also jot it down somewhere, because we'll need to refer to it while solving our questions. Okay, moving ahead now. The takeaways from this question would be that you have to see that there is so much of information, and how with so much with so much of detail, I'm trying not to get confused, and you have to find yourself some innovative ways wherein you can use this data, you can put it clearly and in a way that when I see the questions I can immediately answer. So try and utilize your time in putting the information correctly, rather than just skying back in between the question and the answer, the question and the information. That is not a good approach. A good approach will be to utilize 2 minutes, 2.5 minutes to do these things. लेकिन अब मेरे पास एक बार जब एक sorted table है, I move on to the questions. I know it is going to take me less than a minute to solve the questions. Because here it is not just about doing the questions, doing them correctly, but it is also to do them in minimum time. Okay, so let's go ahead. All right, so I have all of these questions and I will quickly just make your houses here and put all the information here. So this is the information that I have. This is Norwegian. This is going to be your Englishman. This is going to be your this is going to be your Italian. This is going to be your Englishman. This is going to be your Spaniard. All right. Then the remaining information is that this house is blue. This house is red. This house is white. Then this house drinks tea, this one drinks milk, and here they consume fruit juice. All right, so this is the information. Let's start using it. So the first question is, milk is drunk by. So clearly you have it right here and you don't even have to waste any time. Milk is drunk by the Englishman. So the option B. Second question is the Norwegian drinks. Now here, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं दिया. So don't get confused. Just see कि the Norwegian drinks. Milk, no. Milk तो Englishman पीता है. Tea जो है वो Italian पीता है. And fruit juice जो है वो Spaniard पीता है. That means एक ही ऑप्शन बची Norwegian के लिए, and that is going to be your cocoa. Last question. Which of the following is not true? कौन सी statement true नहीं है? First, milk is drunk in the red house. So milk जो है red house में है, so this is a true statement. Next, Italian lives in the blue house. So Italian lives in the blue house. This is also a true statement. The next is that the Spaniard lives in a corner house. So the Spaniard lives in the corner house. I can see that. So this is also a true statement. Obviously, the last one is the false one. Let's read it once. The Italian lives next to the Spaniard. So that is not true because the Italian is here and the Spaniard is here. So this is the not true statement. So the correct option is option D.
So here, we've done our questions. It did not even take us like 30 seconds to do this. That is because we actually utilized our time properly, constructed a clear, laid out, table or information, and that is why we were able to do it without getting confused. All right, let's move ahead to our next question. Okay, so as I told you that there could be questions which include numbers also, and otherwise there are simple questions like with just normal information that we just did prior to this. Now here, these questions again, you have to keep in mind that you want to sort the information. Everything is given in the question. It is just a matter of how you try and sort this. Always go in for the most clear points first, because आपको अपनी information जैसे जैसे it's all about connecting the dots. Okay, so dots connect करने के लिए अगर आप पहले, it's like think of it like a puzzle. ठीक है, जब भी हम एक पजल बनाने लगते हैं तो what we always try to do it, I mean I personally do that. So जब भी हम एक पजल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, फर्स्टली वी ऑलवेज ट्राई एंड गो फॉर द कॉर्नर्स. वाई इज़ दैट सो? क्योंकि कॉर्नर वाले पीसेस में मुझे पता है कि एक साइड फ्लैट होगी, सो दोज आर लाइक द क्लियर इंडिकेशंस कि वो कॉर्नर पीसेस हैं. देन अगर मैं पहले कॉर्नर वाला पीस बना दूंगी, देन इट्स मच ईजियर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट एन आउटलाइन. दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, इट्स ऑल अबाउट कंप्लीटिंग योर पजल. सो फर्स्ट गो इन फॉर द पॉइंट्स, यूज दोज पॉइंट्स ऑफ योर क्वेश्चन जिनमें क्लियर इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज जैसे जैसे आप उस पर बिल्डअप करोगे आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा. So let's try and do this. Okay, so the question says that a wholesaler dealing in ready-made garments sent a consignment of 2 brands of shirts to a retailer by goods trade. However, the consignment was tampered in transit and the retailer refused to accept it. Meanwhile, the wholesaler also lost the details of the consignment. Later on, only the following data about the numbers could be recovered. Now, this is the table जो data हमें मिला. A frantic search for more data revealed. So this is additional information that was revealed later on. So now ऊपर में अगर आपने देखा, so now you have to see and understand the question. So अगर आप देखोगे तो पहला जो ये इतना सारा है, इतनी सारी information, this is not going to tell you anything to solve the question. So that means now forget about it. That was just a brief given. Forget about that. Now what you need is this table जिसमें कुछ numbers हैं, and ये जो information है यही आपकी help करेगी आपका table construct करने में. Alright, so let's start. सबसे पहले है कि 60% of the shirts were of size large और extra large. That means जितनी भी shirts थी total, उनमें से 60% large या extra large थी. Then brand B shirts formed 45% of the consignment. The third is 50% of brand A shirts were of medium size. So अब अगर first point देखें कि 60% of the shirts were of size large और extra large. That means यहाँ पर जितनी total shirts हैं उसमें से 60% large और extra large थी, तो बाकी बचा क्या? Size medium. तो that means बाकी की बची हुई which is 40% वो हो गई medium. However, if you see तो ये find out कैसे करेंगे? Because for this I need one number and that is total shirts. Okay. Going on to the second point. So यहाँ पर brand B shirt. Okay. Going on to the second point. Brand B shirts formed 45% of the consignment. Now again यहाँ पर मुझे total consignment का number अगर नहीं पता तो मैं 45% से क्या बताऊँगी? So again what I need is total consignment का number या total shirts का number. Last point is 50% of brand A shirts were of medium size. तो अब यहाँ पर 50% of brand A shirts were medium size. That means पहले पता होगा कि brand A में कितनी shirts थी, उसमें से पता चलेगा कि medium size की कितनी थी. So that means कि यहाँ पर घूम फिर के I am missing on a lot of information. But if you see, there is one point from where I can start, and that is going to be this, which is brand B shirts formed 45% of the consignment.
दैट मीन्स जो भी कंसाइनमेंट का साइज है उसमें से 45% जो है वो ब्रांड बी की हैं एंड फॉर्चुनेटली आई नो कि ब्रांड बी में कितनी शर्ट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड वी यूज दिस डेटा. पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें से मुझे सीधा डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है यानी ब्रांड बी शर्ट्स फॉर्म्ड 45% ऑफ द कंसाइनमेंट, ये बहुत यूजफुल लग रहा है क्योंकि इससे मुझे टोटल कंसाइनमेंट का नंबर मिलेगा. सो दिस मीन्स दैट ये 45% जो है ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, और मैं टोटल कंसाइनमेंट को x कह देती हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 252. सो इसी में से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर आ जाए. सो 45/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 252. सो x इक्वल्स टू, यहाँ से इसको रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे. सो 252 इंटू 100/45 विच गिव्स मी 560. So this is the first step and I've solved the first step क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आ गया है total number which is 560. Okay, so यहाँ पर ये 560 आ गया. Now this particular thing will be really helpful to solve a lot of other things. अब बात करते हैं कि ब्रांड बी की जो शर्ट्स हैं, अब यहाँ पर हमें 45% कंसाइनमेंट मिल गई, ये हो गया. अब 5 टोटल नंबर है, 252 मिल गया, तो क्या मैं ब्रांड ए का टोटल निकाल सकती हूँ बाय सिंपल सब्ट्रैक्शन? यस ऑफ कोर्स, एंड दैट इज व्हाट आई गेट माय नंबर एज. तो ये माइनस करके आई गेट 308. ऑलराइट, दैट वाज सिंपल. अब हम बात करते हैं और पॉइंट्स की. तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है, अगेन दिस इज बिकमिंग क्लियर क्योंकि यहाँ पर सिंपली लिखा है कि 50% ऑफ ब्रांड ए शर्ट्स वर ऑफ मीडियम साइज. दैट मीन्स जितनी भी ब्रांड ए की शर्ट्स हैं उसमें से 50% हैं मीडियम साइज की. सो 308, 50% कितना हुआ? सिंपली हाफ ऑफ इट एंड दैट इज गोइंग टू बी 154. सो अगेन एक और हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट अप लेट्स गो टू आवर फर्स्ट पॉइंट क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड यूज कर लिया है. लेट्स गो टू आवर फर्स्ट वन विच सेज 60% ऑफ द शर्ट्स वर ऑफ साइज लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज. अब 60% जो शर्ट्स हैं वो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज हैं टोटल की. दैट मीन्स जो बाकी बची हुई हैं वो होंगी मीडियम साइज. दैट मीन्स जो बाकी बच गया दैट इज 40% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट, यानी कि 560 दैट इज मीडियम साइज की शर्ट्स. तो ये कितना हो गया? लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट फास्ट. सो 40/100 इंटू 560. क्विक कैलकुलेशन, दिस गिव्स मी this gives me 224. So यहाँ पर आ गया 224. So this means टोटल मीडियम साइज की शर्ट्स हैं 224, ब्रांड ए की हो गई 154, ब्रांड बी की हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस गिव्स मी 70. ओके, सो अब मैंने दिख रहा है कि टेबल काफ़ी ज़्यादा फिल हो चुका है. नाउ लेट्स गो अहेड एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन. नाउ 60% ऑफ द शर्ट्स वर ऑफ साइज लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, यानी कि 560 में से जितनी शर्ट्स थी वो लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज थी. लेकिन नाउ आई डोंट इवन यू नीड टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ पर मैंने 224 मीडियम निकाल ली, लार्ज मुझे पता है 185 है, टोटल मुझे पता है 560 है. दैट मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज का टोटल नंबर हो जाएगा, माइनस कर लेंगे इनको. सो दिस वुड बी 151. उसके बाद जब यहाँ पर ये टोटल नंबर आ गया, अगेन वी कैन कैलकुलेट आर रिमेनिंग फिगर्स. सो यहाँ पर अगर ये 63 है, ये 151 है, तो वी कैन कैलकुलेट दिस एंड दिस कम्स आउट टू बी 88. सो एक बार वर्टिकली एक बार हॉरिजॉन्टली आपके एक एक करके सारी वैल्यूज आ जाएंगी. So now we have 252, we have 70, we have 88. We can calculate this missing value. This is going to be 94. Again, we have both of these values. 185 total है, 94 आ गया. यहाँ की missing value 91. Now, absolutely don't go by how I am going. If you have other ways to calculate, by all means try and do that. Just ensure that you do not use a lot of time. Okay, also try and definitely do this question on your own without using a calculator so that your calculation improves.
अब यहाँ पर मेरा पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है. नाउ यूजिंग दिस टेबल एंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन इट, आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो लेट्स गो अहेड. सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ जॉट डाउन कर दी है, सो इट इज़ ईजियर फॉर अस टू सी. नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रांड बी शर्ट्स आर ऑफ साइज एल. ब्रांड बी में कितनी परसेंट कितने परसेंट शर्ट्स जो है वो साइज एल की हैं. सो दैट मीन्स ब्रांड बी पे चलते हैं. ब्रांड बी में लार्ज साइज की शर्ट्स कितनी हैं, 94, और ब्रांड बी की टोटल्स कितनी है, 252. So that means 94 by 252. This is the ratio and multiplied by 100. इससे मिल जाएगी मुझे percentage. So the answer is going to be, just calculate it quickly and you will get your answer, and it is approximately comes out to be 37%. So the correct answer would be A, 37%. Now all of this is just a matter of calculation, तो इसलिए go with it and be fast with it. Okay, moving on to the next question. यहाँ पर है what percentage of large size shirts belong to brand A. Now again, कितनी large size की shirts brand A की हैं percentage के हिसाब से. So again, सबसे पहले देखते हैं कि brand A में large size की shirts कितनी हैं, 91. अब यहाँ पर let's try and understand यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है. यहाँ पर उन्होंने बोला है कि टोटल में से जो लार्ज साइज की शर्ट्स हैं उनमें से कितनी परसेंट जो हैं ब्रांड ए की हैं. सो यहाँ पर आप इसका टोटल नहीं करोगे, यू हैव टू सी कि इसका टोटल है, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने बोला है कि लार्ज साइज की शर्ट्स, जितनी टोटल लार्ज साइज की शर्ट्स हैं उसमें से ब्रांड ए की कितनी है. तो टोटल लार्ज साइज की शर्ट्स हैं 185, उसमें से ब्रांड ए की हैं 91. So you multiply this by 100 and that is your percentage. So the question here is that the calculation is not the tricky part. The tricky part is to see कि आपको किसका percentage find करना है. So be sure that you have to read the question carefully ताकि आप इस चीज़ के अंदर confuse ना हो. So I have found this out. So 91 by 185 into 100. राइट ऑफ द बैक भी अगर आप विजुअली भी देखोगे लाइक 91 है या 94 है तो आपको दिखेगा कि लाइक हाफ नहीं है, बट दिस इज़ अ लिटिल लेस दैन हाफ, दिस इज़ अ लिटिल मोर देन 50%. सो ऑब्वियसली लिटिल लेस दैन 50% इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. क्लियर? ओके. Okay, moving to the last question, we have how many brand A shirts are of large size. So no percentage, it's a very direct question कि brand A की shirts में से कितनी large size की हैं. So ये रहा मेरा brand A, उसमें से large size की shirts हैं 91. So this is a direct question and a very, very easy one. So that concludes our session. So in today's session, we saw the topic analytical reasoning and we tried and attempted some different variety of questions ranging from something very simple to something that is slightly more tedious, something with a lot of information and something with numbers. So I request that please keep on practicing these questions, and especially when it comes to numbers, don't get dependent on calculators. Strengthen your mental maths because that is definitely going to help you. I'll see you with another session. Thank you so much.